So we were here after learning the objects of picking. Now we are taking types of picking motions, and types of picking motion are categorized into two categories: over pick motion and under pick motion. Just so picking motion are categorized into two categories. One is over pick motion, another is under pick motion. Under pick motion is further categorized into two categories: cone under pick motion and side lever under pick motion. So at this stage, only you have to remember the names only. Picking motion divided into two categories: over pick and under pick. Under pick divided into two categories: cone under pick and side lever under pick. We will study in detail about some of the mechanisms in the coming classes, so don't worry about that. Now we are taking comparison between under pick and over pick, so these two terms will be very clear to you. What is an over pick loom and what is an under pick loom. So here we are taking some points on the basis of which we are comparing these two types of picking mechanisms or picking motions, known as under pick motion and over pick motion. So according to position of picking arm is an important device or important part of picking mechanism. So what is the position of this picking arm? If picking arm is just below the shuttle box, because shuttle, which is the waft carrier, is resting in the shuttle box. The shuttle box का जो level है, वही level shuttle का होगा. So if the picking arm is just below the shuttle box, it is known as under pick motion. Means picking mechanism is underneath the shuttle box. And if it is above the shuttle box, then it is known as over pick. Over pick means the main mechanism is over the shuttle box. Shuttle box के ऊपर हैं, और अगर नीचे की तरफ है तो उसको हम बोलते हैं under pick motion. And that is the basic reason behind the name under pick and over pick. Is it clear? This is the position of picking arm with reference to shuttle box, deciding under pick or over pick. In over pick, it is above the shuttle box, the picking arm, and in the under pick, the picking arm is below the shuttle box. So that should be clear. That is the main difference, which is defining them, which is behind the name of the different type of motions. Now there is a difference of speed of loom is there if we are going for under pick loom or over pick loom. Under pick loom are running at lesser speeds as compared to over pick. So over pick are having higher or greater speed as compared to under pick, you can say. So under pick का जो speed है वो कम होता है over pick के comparison में. Size of loom means width of the loom. So size of the loom, if you consider size of loom, here this under pick mechanism or under pick motion is used for broad and medium machines. It is not broad, it is broad. Means जिनका width ज़्यादा है या medium है, उनके लिए हम under pick use करते हैं, और narrow width loom के लिए हम over pick use करते हैं. So this is used for narrow width looms. This is used for wider width or medium width machines. As far as power consumption is concerned, under pick is consuming more power as compared to over pick mechanisms. So you can say over pick is consuming less power as compared to under pick mechanism. Is it clear? These four differences between under pick and over pick. Do you have any question in this slide? कोई point clear नहीं हुआ है तो you can ask here also. If it is clear, then we can move further. The fifth point is fabric woven. किस तरह के fabric हम बनाते हैं, उसके according भी हमने दोनों को differentiate किया है, दोनों को compare किया है. This is used for weaving heavy fabric
and also used in silk and rayon industries. Heavy fabrics बनाने के लिए हम underpick mechanism ही use करते हैं, जबकि medium weight fabric and low weight fabrics के लिए हम overpick use करते हैं. As far as oiling and maintenance is concerned, there is no need of oiling the spindle because spindle is not found in the shuttle box. The shuttle box which we are using on underpick machines are not having spindles on which the picker is moving. So if we have the spindle and picker is moving on the spindle, then there is a need of oiling. The spindle is there. But यहाँ पर कोई spindle ही नहीं होता है because shuttle is moving in a groove in the shuttle box. Shuttle box में spindle के बजाय groove होता है जिसके अंदर शटल जो आपका शटल है वो मूव करता है, इसलिए यहाँ पर हमें जरूरत नहीं होती है ऑयलिंग की. हियर ऑयलिंग ऑफ स्पिंडल इज रिक्वायर्ड, तभी पीकर स्मूथली मूव करेगा, पीकर और स्पिंडल के बीच में फ्रिक्शन कम होगा, इसलिए यहाँ पे हमें ऑयलिंग की जरूरत पड़ेगी. एंड जहां हम ऑयलिंग कर रहे हैं वहां पर ऑयल के फैब्रिक पर गिरने के चांसेस होते हैं, फैब्रिक पर ऑयल के निशान होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए अगर ऑयलिंग हो रही है, ऑयलिंग अगर हमें करना पड़ रहा है, देन देयर आर चांसेस ऑफ जो आपका जो फैब्रिक है उस पर इसके वो थोड़ा खराब हो सकता है, ऑयल के धब्बे उस पर पड़ सकते हैं. तो दैट इज द एडवांटेज विद अंडरपिक मैकेनिज्म. एंड नॉइज प्रोडक्शन, एज फार एज नॉइज प्रोडक्शन इज कंसर्न, हियर इन अंडरपिक मोर नॉइज इज प्रोड्यूस्ड as compared to overpick. Means overpick is making less noise as compared to underpick mechanism. So these are the basic differences between overpick and underpick, and depending on our requirement, we are preferring or we are choosing or we are going for underpick loom or overpick loom for a particular fabric. Clear? So far we have done, we have started the topic from this with the definition of picking, then objects of picking. Two objects we have taken to deliver the shuttle along the correct flight path and to project the shuttle at a predetermined velocity. Then we have seen what are the arrangements we have to do so that we can achieve these two objects. For that, shuttle box back and this reed should be in perfect alignment, and shuttle box base and race board should be in perfect alignment. This will avoid the chances of shuttle fly off, and the shuttle delivered satisfactorily by the picker. This will avoid the chances of shuttle trapping. In this way, by following these three arrangements, we can achieve the two objects which we have defined in previous slide. Then we have taken classification of picking motion, overpick, underpick, and underpick is further classified into cone underpick and side lever underpick. And then we have taken basic differences, major differences between underpick mechanism and overpick mechanism. So these are the advantage and disadvantage. The first point is, it is not the advantage or disadvantage. First point is related with name of the motion. The name of the motion is decided according to the first point. If the picking arm, which is part of picking mechanism, below the shuttle box, then it is known as underpick. Agar under the shuttle box hai, to it is underpick. And if it is over the shuttle box, then it is known as overpick. Speed of loom, size of loom, power consumption, all these comes in the advantage and disadvantage, and that will depend on our requirement. If you want to produce heavy fabric, then we have no choice. However, it is making, underpick is making more noise, or maybe production may be less, but still we have to go for that. So these are the basic differences between these two types of mechanisms. So now we have 7 or 8 minutes, so we can start our new topic, that is underpick motion. In this motion, the picking is done by the help of picker from the underside of the warp sheet. Underpick है मीन्स पूरा जो मैकेनिज्म है वो नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ से ही पीकर को मूवमेंट मिलेगा, and picker will transfer the movement to the shuttle, and shuttle will move from one side, one shuttle box to another shuttle box. Its basic principle of any underpick motion is given here. Then we will take detailed working of underpick mechanism, but before that we are taking just this basic principle. And basic principle of any underpick motion is,
it is based on the principle of to and fro motion given by the rotary motion of the bottom shaft. जो बॉटम शाफ्ट रोटरी मोशन कर रही है, बॉटम शाफ्ट जो रिवॉल्व कर रही है, और बॉटम शाफ्ट के एक रिवॉल्वेशन में जो 2 पिक इंसर्ट होते हैं, तो बॉटम शाफ्ट जब रिवॉल्व कर रही है तो उसके रोटरी मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट करते हैं. टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे, जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होता है उसको हम टू एंड फ्रो मूवमेंट बोलते हैं. एंड रोटरी मतलब जो गोल गोल जो घूमता है उसको हम रोटरी मोशन बोलते हैं. तो बॉटम शाफ्ट इज मेकिंग रोटरी मोशन. इस रोटरी मोशन को हम कन्वर्ट करते हैं टू एंड फ्रो मोशन में विद द हेल्प ऑफ पिकिंग मैकेनिज्म. एंड इन दिस द पिकर इज माउंटेड ऑन अ पिकिंग स्टिक. इस मैकेनिज्म में क्या होता है, इस मोशन में क्या होता है, जो पिकिंग स्टिक के ऊपर पिकर माउंट होता है. पिकर इज द लास्ट डिवाइस ऑफ पिकिंग मैकेनिज्म which comes in contact with or which throws the shuttle or which blow the shuttle from one side to other side or which forces the shuttle from one side to other side. तो जो hit करता है, जो strike करता है, that is picker. So picker is mounted on picking stick which gets movement from the side lever. और picking stick को movement मिलता है side lever से and side lever को movement मिलता है bottom shaft से. How it is working that we will see later on. But the basic principle is bottom shaft का जो rotary motion है उसको with the help of side lever and picking stick we are converting into to and fro motion. और to and fro motion अगर पिकर को मिलता है तो वो स्ट्राइक करेगा शटल के ऊपर और शटल एक साइड से दूसरी साइड में मूव करेगी एक पिक को छोड़ते हुए. बिकॉज शटल इज कैरिंग वेफ्ट पैकेज इज माउंटेड इनसाइड द शटल बॉक्स एंड शटल इज रेस्टिंग इन द शटल बॉक्स. तो शटल को जब थ्रो किया जाता है शटल बॉक्स से तो साथ में वो वेफ्ट को लेके जाएगी और जो वेफ्ट को लेके जाएगी तो वेफ्ट इंसर्ट होगा थ्रू द ओपन शेड एंड इन दैट वे पिकिंग इज डन. करेक्ट? Getting the point? So this is basic about underpick motion and its principle. There are some characteristics about the side lever underpick mechanism. First, we are taking side lever underpick motion in detail. So side lever underpick motion is the simplest motion which is used for weaving all types of fabrics. And all the parts fitted outside of loom, so its maintenance is easy. That is the most beneficial thing about side lever underpick mechanism. ये जो पूरा mechanism होता है लूम के साइड के अंदर बाहर की तरफ फिटेड होता है. अगर लूम के बाहर की तरफ फिटेड है तो जो वीवर जो भी मेंटेनेंस वर्कर्स हैं या मेंटेनेंस ऑफिसर्स हैं उनको लूम के नीचे जाने की जरूरत नहीं है, उनको लूम के बाहर की तरफ से ही उसको मेंटेनेंस की जा सकती है. दैट्स व्हाई मेंटेनेंस इज वेरी इजी फॉर looms which are equipped with side lever underpick motion, and that is the plus point or positive point with side lever underpick mechanism, and it is also very simple. Its working is very simple. So these are the two advantages associated with side lever underpick mechanism. Now here the construction part of side lever underpick mechanism. Here main parts are taken into consideration. A wooden side lever, A fulcrum date O. ये मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम के साथ में. अभी जस्ट आपको पार्ट्स के नाम से इंट्रोडक्शन होगा. एक वुडन साइड लीवर होता है जो कि फलक्रम्ड होता है एक पॉइंट के ऊपर. पिकिंग शू B is fixed on the side lever. साइड लीवर के ऊपर एक पिकिंग शू होता है जिसको हमने B से इंडिकेट किया है डायग्राम में. तो दो पार्ट हो गए. साइड लीवर के ऊपर पिकिंग शू फिक्स है, ठीक है. A wooden picking stick C is fixed to an iron shoe D. यहाँ पे दो पार्ट और हमने उनके नाम इंट्रोड्यूस किए. वन इज पिकिंग स्टिक, अनदर इज आयरन शू. आयरन शू इज डिफरेंट फ्रॉम पिकिंग शू, ठीक है. तो जो पिकिंग स्टिक है वो फिक्स होती है आयरन शू के ऊपर. Picking stick is fixed to an iron shoe. And now here the forward side lever is above the shoe. और side lever का जो forward part है वो शू के आयरन शू के ऊपर होता है. The picker E is loose on the picking stick and is guided between the bottom groove of the shuttle box. जो picker है E वो लूज होता है पिकिंग स्टिक के ऊपर और गाइडेड होता है शटल बॉक्स के
जो ग्रूव है उसके अंदर से। तो यहाँ पर एक नया पार्ट आया, पीकर, पिकिंग स्टिक, आयरन शू, picking shoe and side lever. These are the main parts. Another part is an iron disc is mounted on bottom shaft on which a bowl is placed, which is striking down the side lever with the help of bowl. एक आयरन डिस्क होती है जो कि बॉटम शाफ्ट पे माउंटेड होती है और इसके ऊपर एक बाउल फिक्स होता है, इसके ऊपर एक बाउल हम माउंट करते हैं, जो ये बाउल जो है वो स्ट्राइक करता है साइड लीवर को, प्रेस करता है नीचे की तरफ। And some springs we are using, spiral springs are attached at the back of side lever and at the bottom of iron shoe D. जो spiral springs है उनका फंक्शन होता है, जो मोशन हो चुका है उसको वापस नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए हम स्प्रिंग्स को यूज करते हैं। मोशन किसी डिवाइस की वजह से हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उसको वापस नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए, मतलब पिकिंग के बाद में वापस नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए हम स्प्रिंग्स यूज करते हैं। सो दिस इज मेन पॉइंट्स व्हिच वी हैव कवर्ड अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरपिक मैकेनिज्म, side lever underpick mechanism. We have less than 1 minute, so you can see the diagram only. Then we will try to understand this diagram in the next class. So you can see here, this part is side lever. This is bottom shaft. Rotary disc is mounted on bottom shaft. Disc के ऊपर एक बाउल लगा हुआ, एंटी फ्रिक्शन बाउल फिक्स है, which is coming in contact with this picking shoe. ये picking shoe फिक्स्ड है साइड लीवर के ऊपर। साइड लीवर का फ्रंट पार्ट बिल्कुल आयरन शू के ऊपर है और आयरन शू के अंदर फिक्स है पिकिंग स्टिक और पिकिंग स्टिक के ऊपर माउंटेड है पीकर। सो दिस इज कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ साइड लीवर अंडर पिक मोशन. So we will again understand construction as well as working of this motion in the next class. So we have less time. If you have any question, you can ask the question. Otherwise, you can ask in the next class also.